Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching the special presentation of Sansad TV on the first part of the budget session of Parliament 2023. The session commenced on January 31st with President DraupdI Murmu's address. The first part concluded on February 13th. Over the next 20 minutes, let's get you all the highlights and the major developments in this part of the budget session of Parliament. Come along. The budget session that started on 31st of January will reconvene on 13th March after a month-long recess. Ahead of the budget session, the government called an all-party meeting. The all-party meeting is a customary meeting that takes place ahead of the start of the Parliament session. In the meeting, the government seeks cooperation from all the political parties to ensure the smooth functioning of both houses of Parliament during the session. इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं. There is absolutely no issue as far as discussing any issue under the rules and procedures permitted by the chair. Overall, in a good atmosphere, meeting went on well, and I seek the cooperation of all the opposition. And since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. Making his customary remarks at the beginning of the Parliament session, Prime Minister Modi urged members to ensure that the current session of Parliament is fruitful and constructive with meaningful discussions based on humanitarian concerns. राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है. सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है. मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे. हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं. वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है. आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है. डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए. The session commenced with the President's address. Article 87 of the Constitution provides two instances when the President addresses both houses of Parliament. One, at the beginning of the first part of the session after a general election, and the second at the beginning of the first session of each year. The President's address highlights the major policies of the governments, the plans for the upcoming year. It also provides a broad framework of the government's agenda and direction. The President's address is a solemn and formal act under the Constitution. Utmost dignity and decorum befitting the occasion are called from the members. The President's address is the statement policy of the government and as such is drafted by the government that is responsible for its contents. The address contains a review of the various activities and achievements of the government in the previous year and sets out the policies, projects and programs which the government of the day wishes to pursue on important national and international issues. President Murmu delivered her first address to the joint sitting of Parliament. In her address, she listed the steps taken to improve internal security as collective achievements in the long journey to achieve ambitious goals for the country. हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो. हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो,
और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। After the President spelled out the roadmap of the Narendra Modi government, both houses took up discussion on the motion of thanks on President's address. The Lok Sabha and the Rajya Sabha took up the debate on the motion of thanks on the President's address, days after a stalemate between the opposition and the government. BJP MP from Chittorgarh, CP Joshi, initiated the debate in the Lok Sabha. जो 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाया, उसके लिए तप चाहिए, तपस्या चाहिए, समर्पण चाहिए, परिवार भाव चाहिए, गरीब के प्रति संवेदना चाहिए। और वो तब होता है, लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कई सुहानी प्रभात हो रही है। तब लगता है कि आज कितने संघर्षों के बाद, कितनी मेहनत के बाद उस क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नारा दिया। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वंचित समाज को देश की अग्रिम धारा से जोड़ना है। तो आज इस दिशा में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे लाने का, उनके समृद्धि के, उनके उत्थान का बीड़ा उठाया। The scope of the discussion on the address is very wide, and members are at liberty to speak on every matter of national or international importance and other issues. Generally, 3 days are allotted for the discussion on the motion of thanks. The time allotted by the House for discussion is distributed among various parties and groups in proportion to their strength in the House. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने। इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता। This government has actively diminished the space available for dissent, debate and discussion. Making the people voiceless does not ensure continued power, but it will create simmering discontent and resentment. You don't know when it will become into flames. You cannot rule by fear and fear alone. The president said that in her speech said that the country no longer suffers from policy paralysis. But I think it has moved to a dictatorial policy making. क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को, वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं, आप इसको छुपा जाते हैं। Rules 14 to 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha make provisions for the discussion on the address. Under Rule 15, discussion on the matters referred to in the President's address takes place on the motion of thanks, moved by a member and seconded by another member. BJP member Dr. K. Lakshman moved the motion and member Prakash Javadekar seconded it. एक समय भारत अपनी
अधिकांश समय दुनिया की ओर देखती थी समस्या के समाधान के लिए, मगर दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि हर समाधान के लिए हर समस्या उत्पन्न, चाहे वो कोविड-19 हो, आतंकवाद हो या विश्व शांति का वार्ता भी हो। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार करना पड़ा, आज मोदी सरकार ने उस सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास किया गया। भारत एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ जो विकसित देश के लिए भी प्रेरणादायक बन गया। देश को बड़े बड़े घोटालों से, सरकारी योजनाओं से, भ्रष्टाचारी के समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति और आज मोदी सरकार में मिला था। इस प्रकार के निर्णय से हमारी सरकार में देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। Supposed to be the 5th largest economic country in the world, we all feel proud to be called Indians. उनका संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण हुआ वो जोशपूर्ण था, सारगर्भित था, मुद्दों से लैस था, देश के तरक्की की चर्चा थी, गरीब के उत्थान का मंत्र था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला ये भाषण था। मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अमृत काल की कल्पना, 25 years विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया एंड अ प्रोग्राम फॉर दैट। आज बजट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजट में उसकी एक बेसिक नींव रखी गई है कि 25 साल हम कैसा विकास करेंगे। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट वॉज नॉट ए इजी जॉब, it was most difficult job, but continuous monitoring and immediate remedial actions have resulted in managing in better way the inflation in this country. Meanwhile, the opposition parties sought to corner the government over several issues. ज़्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज़्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहाँ पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड है। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। Another issue on Manrega, app, simple issue. This is the real issue on the ground. The app mandatory for officials to upload twice a day laborers' photographs. That is completely impractical because the connectivity is low, so the attendance will go low, and what will happen? The union government will have less money to spend on Manrega. So, listen to this statistic. 9 crore active workers. If you take 9 crore active workers who are working 100 days a year, total expense will be 3 lakh crores. Instead, 73,000 crores has been allocated by this government. Sir, what has been in this country and what is now in this country is a very big thing to compare. What has been? Diversity and inclusion was. Now, adversity and exclusion. Sir, earlier it was unity. Now it is uniformity. Federalism and secularism are eroded. Free speech is undermined. And sir, dissent is criminalized. We boast that we are the 5th economic power in the country, in the world. But the situation is that poverty has yet to be eradicated. And the middle class is to be prosperous. Humanitarian obligations is yet to be realized. Let me say what all we have experienced in this country, in this government, sir. Number one, petrol and diesel prices were hiked 78 times during this regime, and 14 times only between this year. The BJP in its manifesto promised that the income of the farmers would be double.
But what happened? It has not doubled. Rather, the price of DAP has increased from 1,200 to 1,350. The price of urea has not increased, but the quantity has been reduced from 50 kilograms to 45 kilograms. Prime Minister Modi replied to the discussion of motion of thanks in both houses. Prime Minister said his government focused on national progress and also paid attention to regional aspirations, with a firm resolve to make India Viksit Bharat by 2047. राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। भाषण की हर बात, अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूँ। और मुझे आशंका थी कि ऐसी बातों पर यहाँ जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे, वो विरोध करेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन मुझे खुशी है, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है। इससे बड़ा गौरव का विषय क्या हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े, वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने, ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए, ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। After the Prime Minister's reply in both houses, Parliament adopted the motion of thanks. I shall now put the motion to vote.
The question is that an address be presented to the President in following terms: that the members of Rajya Sabha assembled in the session are deeply grateful to the President for the address, which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31, 2023. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented her fifth consecutive budget in the Parliament during the first half of the budget session on 1st of February. She also listed government's priorities for the Amrit Kal from 75 years to 100 years of India's independence. A day before presenting the Union budget, the Finance Minister also tabled the Economic Survey. Finance Minister Sitharaman listed 7 priorities of the Union budget. She said they complement each other and act as Saptrishis, guiding us through the Amrit Kal. The priorities include inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector. The capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. Both houses also took up general discussion on the Union budget. Praising the Narendra Modi government, the Treasury benches said the Union budget focuses on job-oriented growth through enhanced outlay for capital expenditure. हम आश्चर्यचकित है कि कैसा स्नेह होता है सरकारों का। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय सभापति जी मेडिकल कॉलेज आए, कितना? मेरे यहाँ 3 जिला मुख्यालय हैं, तीनों जिला मुख्यालय पर 3 मेडिकल कॉलेज, एक बनकर चालू हो गया, दोनों इतनी हाइट पर आ गए कि मनसुख भाई यहाँ बैठे हैं, मांडविया जी मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दूंगा, नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उनको भी दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद बधाई दूंगा। कमाल कर दिया साहब। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, हम सोच नहीं सकते थे, अभिभूत हैं हम तो। आज प्राकृतिक खेती के लिए 3 करोड़ किसानों तक जाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर, इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी और देश के नागरिक भी मिलकर हम लोग प्राकृतिक खेती के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। The opposition, on the other hand, termed the budget insipid and questioned the government on inflation and unemployment. AP has been receiving empty promises and scant allocations since the bifurcation of the state in 2014. In this budget, the finance minister has given 5,300 crores to the Upper Bhadra National Irrigation Project in Karnataka, but nothing has been given for Polavaram, which is a national project and has been pending for so many years. This is the first disappointment for AP, sir. I would not say much on Polavaram,
since the Government of India and the Jal Shakti Ministry knows every single detail of it. I would only request the Finance Minister for approving the second revised cost estimates of 55,657 crores and release the pending dues to Andhra Pradesh, which they've already spent, sir. एक तिहाई आबादी है हमारे मुल्क में बच्चों की, 33% हमारी कुल आबादी के बच्चे हैं, और उसी सेक्टर में चाइल्ड वेलफेयर में कोई मिड डे मील्स में 43% की कमी की गई है जो बजटी प्रपोजल्स हैं। ICDS में भी हम देख रहे हैं कोई 40% के करीब कमी की गई है, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब आप जो वीकर सेक्शंस हैं, जब आप वो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं तो उस मामले में इतनी बड़ी कटौती तो काबिल कबूल नहीं है। Replying to the discussion on budget in both houses, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the budget stands for continuity, bringing stability to the economy, along with predictability of taxation. The Indian economy is still the fastest growing major economy and shall continue to be so even in 23-24. So since the pandemic, when the economy dipped by -23, our efforts to recover the economy has been through the CAPEX route, capital expenditure route from the government side. And this, because it has great multiplier effect, enables to have in situ jobs created where the projects of the public expenditure are being spent and the projects are being made to rise. So that immediately in situ creates a lot of jobs and therefore triggers better income and therefore triggers better consumption. Several private member bills, zero-hour mentions, special mentions and start questions were also taken up on the floor of the House. The recess allows department-related parliamentary standing committees to examine demands for grants of various ministries. The finance bill and related demands for grants are passed in the second phase of the budget session. The session is expected to conclude on April 6th. And with that, we come to the close of our program.